Hey everyone, so this is part 6 of Bible of Option Trading series. So today we are going to learn when to do a long put. So let's start. Guys, काफी बड़ा बुक है, राइट? सो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अब, ओके? विल ट्राई, टू कवर एज मच एज वी कैन. सो जब हमारा मार्केट में व्यू बेरिश होता है, we feel like market can fall from this position, right? So usually what we do, we buy a put position. So this is potential. This, I mean, novice trader can use this strategy. Generally they use this. इसमें हमारा sentiments क्या होता है? Direction should be bearish. Then asset legs. Then यहाँ पे क्या होता है? Maximum risk हमें पता है, right? जितना प्रीमियम आपने मार्केट को दिया है उतना ही आपका रिस्क के ऊपर रहता है. That's why the risk is cap. Excuse me. And the maximum reward is uncap here, right? Because it is kind of lottery, right? Suppose, I mean, if the market started moving in your into your direction, right, and एक आधे दिन होता है, right? We say bloodbath in market, right? Suppose it is on Wednesday, right? So usually this kind of thing happen जहाँ पे आपको market can fall 250 and 300, and in that case, this can be a jackpot to you. But guys, always remember lottery एक ही बार लगता है, या फिर the chances of getting lottery में आने का बहुत बहुत ज्यादा रेयर होता है, राइट? इट इज जस्ट लाइक, आई विल से, ड्रीम मिलियन में कभी जीते हो क्या? नहीं जीते हो ना, करेक्ट? सो दिस इज जस्ट लाइक ओनली, राइट? सो जो हम जैकपॉट का जो जो भी देते हैं ना कॉल, लाइक मनी डबल ट्रिपल, राइट? नॉट इट ऑलवेज हैपन्स. अगर होता भी है तो नो वन इज गोइंग टू होल्ड दैट पोजिशन टू अ दैट मोमेंट, राइट? चार्ट्स पे या फिर सिस्टम पे अच्छा दिखता है, लाइक 17 पे बाय दिया था, देन इट वेंट अप टू 100, राइट? बट आई डोंट थिंक, I mean, it is very difficult to, to hold the position to that extent, right? uh, Anyways, तो चलो. तो ये क्या बोल रहा है हमारा? बाय अ पुट इज द अपोजिट ऑफ बाइंग अ कॉल. अ पुट इज इन ऑप्शन. A put is an option to sell. When you buy a put, your outlook is bearish, correct? Then हम कौन कौन से ले सकते हैं? In the money, at the money, out of the money, you can buy put here. आई विल सजेस्ट एट द मनी जाओ हमेशा, ठीक है? ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं जाने का. Then steps to trading a long put, buy the put option, right? Then steps in, try to ensure that the trend is downtrend and identify the clear area of resistance, correct? पुट कब करना है या फिर कॉल को कब सेल करना है, जैसे कि लास्ट सेशन में बताया, राइट? रेजिस्टेंस में रहेगा वहां पे हमें करना है, राइट? आवर सिस्टम शुड सपोर्ट इज, राइट? यू मस्ट हैव अ ट्रेडिंग प्लान. Then manage your position according to rules defined in your trading plan. Sell your long option before the final month, right? वो सब चीजें वही है. Then, guys, बहुत simple है. With a long put, your outlook is bullish. You expect a fall in the underlying asset price, correct? And then again, what is says C rational है. ये मुझे पसंद आता है इस बुक का. To make a better return that if you had a simply sold a short the stock itself, to ensure that you give yourself enough time to be right. This means you should go at least 6 months out. It's not 1 or 2 year leap. If you think these are expensive, then simply divide the price by the number of months left to the expiration and then compare that to a short-term put prices. You will see that leaps and longer-term options are far better value per month and then give you more time to be right, thus improving your chances of success. Another method is to buy only dip in the money option. So guys, what he, I mean, the book is trying to say, when you are going to sell options, right, it is good expiry में ये करो, sell करो, but when you buy options, considering your direction, the market should favor you, right? But we don't know this is going to happen today, tomorrow, right? कितना दिन रहेगा. That's why you should buy instead of going in the money. I mean, one of the option you can buy in the money, or you should go for the मंथली ऑप्शंस में जाओ, राइट? दूर के ऑप्शंस में जाओ. आई एम सेइंग एक्सपायरी के, राइट? टाइम ड्यूरेशन ताकि ज्यादा मिले टू बी, आपके व्यू में मार्केट को आने के लिए. सो दैट्स व्हाट. नाउ फर्दर इज नेट पोजीशन. सो अगेन दिस इज अ नेट डेबिट ट्रांजैक्शन बिकॉज you pay for the put option. Your maximum risk is capped to the price you pay for the put. Your maximum reward is uncapped until the stock falls to zero, whereupon the maximum profit is the strike price less than what you paid for the put. यहाँ पे थीटा टाइम डीके, राइट? वी आर व्हाट वी आर मेकिंग डेबिट स्ट्रेटेजी. मार्केट को पैसा देना पड़ रहा है, मार्केट को पैसा देना पड़ रहा है, तो थीटा हम लोगों का हो गया यहाँ पे. इट इज इनेमी फॉर द ऑप्शन बायर. दैट्स वाई इट इज सजेस्टेड, राइट? वी शुड बाय अ फार, आई मीन ज्यादा एक्सपायरेशन वाला मंथली ऑप्शंस में जाओ व्हेन यू डू अ बाय, आई मीन डू अ, ऑप्शन बाइंग. नाउ दैट्स व्हाट.
further time period to trade, then selecting the stock, selecting the options, strikes are important, then risk profile, those things are there. Then see delta is negative and moves at its fastest rate along the strike price until it really notice how delta is zero when the option is deep out of the money, right? Theta is negative, illustrating that the time decay hurts the long put position. तो एक बार मैं बस हम ऑफस्ट्रा पे प्लॉट कर देंगे सो दैट हमें क्रिक्स भी वहां पे पता चल जाएंगे. करेक्ट. एडवांटेजेस क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फ्रॉम डिक्लाइनिंग स्टॉक प्राइसेस, फार ग्रेटर लेवरेज देन सिंपली शॉर्टिंग द स्टॉक, राइट. अनकैप प्रॉफिट पोटेंशियल विद अ कैप रिस्क. तो गाइस एक आइडिया देता हूँ आप लोगों को. वाई पुट मार्केट में क्यों आया, राइट? सपोज कंसिडर कोई बंदा है जिसने एक मान लो इन्फोसिस के मेरे पास में 1500 पे आई एम हैविंग ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स, करेक्ट. एंड देन गाइज इतना मनी मेरा लगा हुआ है इन्फोसिस में, राइट, बट मार्केट में तो कुछ यू नो कुछ बोला नहीं जा सकता. सो देयर माइट बी चांस कि इन्फोसिस 10%, 20%, 30% बिकॉज ऑफ न्यूज, राइट, can, I mean, any day it can drop, right? So always there is a possibility. So what we can do in that case, right, to hedge our stock positions, right, usko, I mean, for that safety we can buy a put, right? मेरा 15,000 है, अगर मार्केट में अगर कोई ऐसा न्यूज भी आता है ना, आई डोंट वांट टू सोल्ड दैट सेल सोल्ड दो, आई डोंट वांट टू सेल those stocks. In that case what I am going to do, right, in that case we can have a put, right, that will save us, हमारा जो भी स्टॉक्स रहेगा, हमारी जो भी होल्डिंग्स रहेंगी, राइट, इट विल प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन टू दैट, right? That is how we can manage the risk there. So that is why this put and call comes into the picture in the option market. So potential 100% loss if the strike price expiration dates and the stocks are badly chosen. High leverage can be dangerous if the stock price move against you. ठीक है भाई. अभी यहाँ पे मिटिगेटिंग लॉस वही सब चीजें इसने यहाँ पर बताइए. तो एक बार विल गो एंड जस्ट सिंपली गाइस, यहाँ पे हम जैसे लास्ट सेशन में भी एक बनाया था, विल सी क्विकली, राइट. सो निफ्टी इज ऑलमोस्ट अराउंड 20,200, राइट. सो एक मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ. व्हाट वी कैन डू मंथली, करेक्ट, एंड देन विल डू 20,200 एक एट द मनी का. आई विल बाय द पुट हियर. आई मीन we'll see कि what does Greek suggest to us. ठीक है, we'll add this position simply. Okay, something was missing, you said 2200. So देखो 114 प्राइस पे चल रहा है. ओके, we'll add it simply. तो योर व्यू शुड बी बियरिश, राइट, तभी ऐसी पोजीशन आप बनाओगे तो जिसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, आई मीन, इतना जा सकता है. एंड आपका अगर लॉस होगा तो लॉस विल बी, सी गाइस, 5738. बट व्हाई आई सेड ऑलवेज, वी शुडंट बी डूइंग अ ऑप्शन बाइंग बिकॉज यू सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हियर, राइट, 41%. एंड इफ यू सी ग्रीक्स हियर एज वेल, करेक्ट, हमारा डेल्टा देख लो, थीटा देख लो, गैमा एंड देन वेगा, करेक्ट. थीटा यहाँ पे ऑप्शन बायर के लिए, why it is showing negative because it is, it affects adversely to for the option बायर के केस में, राइट. थीटा दुश्मन होता है. सो दैट इज हाउ, जितना ज्यादा डेल्टा ये बढ़ेगा, राइट, इट इज गोइंग टू हेल्प. ओके, अभी माइनस क्यों है? बिकॉज इट इज पुट, पुट के लिए हमेशा हमारा यहाँ पे माइनस में होगा. एंड देन इट इज हाउ ओनली. ओके, सो आई गेस दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. ओके, हमारा देखते हैं. सो और एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे गाइज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ब्रेक इवन. ठीक है. सो सी, अभी हम विल ट्राई टू लर्न ब्रेक इवन एज वेल. ठीक है गाइज. अभी देखो हमारा, हमने ऑप्शन का कौन सा लिया है? 2200p. ओके, एंड टुडे इज 16 सितंबर एंड वी हैव ब्रॉट इट फॉर 28 सितंबर. सो दिस पोजीशन एक्चुअली गोइंग टू गिव मी अ प्रॉफिट, राइट. अगर कल जाके मार्केट डाउनवर्ड में जाता है, डेफिनेटली इसका ऑप्शन प्राइस का जो है प्रीमियम बढ़ते जाएगा. बट क्या हुआ, बीच में एक आधा वीक आया जिसमें मार्केट हमारा साइडवेज रह गया, राइट. तो वहां पे तो आपका थीटा डीके होगा, राइट, डेफिनेटली. सो ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पर, इट इज ऑलमोस्ट अबाउट यहाँ पे टाइम का वैल्यू है. ठीक है. तो अभी अगर मार्केट 2200 चल रहा है तो 114 माइनस कर दो यहाँ से, तो आपका ऑलमोस्ट आएगा यहाँ पर
20,086, राइट। सो 28 सितंबर को अगर मार्केट एग्जैक्टली जाके 20, यहाँ पे इसका ब्रेक इवन सी, करेक्ट, उतने पॉइंट्स को माइनस किया, 20,085, अगर 20,085 के नीचे जाएगा तभी इसका वैल्यू, राइट, बढ़ता जाएगा 114, 28 आई मीन 085 के वहां तक तो इसका वैल्यू 115 ही रहेगा। दैट मोमेंट यू विल बी इन नॉट प्रॉफिट नॉट इन लॉस। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट आई मीन बिहेव करेगा। सो ये और एक चीज होती है जो ऑप्शन सेलिंग के लिए हेल्प करती है, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन सेलर को लॉस कब होगा, जब वो 20,085 के नीचे जाएगा तभी उसका इसका प्रीमियम बढ़ेगा, तो इन दैट केस ऑप्शन सेलिंग में हमें लॉस होता जाएगा, राइट। सो दैट इज हाउ व्हाई पीपल डू ऑप्शन सेलिंग, बिकॉज ये और एक एडवांटेज मिल जाता है यूज केस में। सो आई होप गाइज यू आर लर्निंग विथ मी, है ना। अगर कुछ सीख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून विथ मी, एंड बाकी ट्रेडिंग तो चल ही रहा है। थैंक यू सो मच ऑल।